पापा से कॉलेज के बहाने गेमिंग लैपटॉप लेना है, क्या करूं? Hello guys, hello. Welcome to the stream. Apologies because I'm a bit late. लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है यार, लाइक मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू अ लैपटॉप एक्चुअली। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग द पॉइंट टू मी। बट लैपटॉप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लाइक यू रियली नीड दैट। तो लाइक जेन्युइनली जोक्स असाइड, नॉट ओनली फॉर गेमिंग बट यू शुड मूव टू अ लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में बहुत फर्क होता है। लाइक यू कैन, आई डोंट नो, लाइक यू कैन टेल योर पेरेंट्स that is like in order for learning also laptop is much better than phone, because फोन में सबसे पहली बात है कि वी आर वेरी प्रोन टू डिस्ट्रैक्शन। फोन हैज बिकम फॉर अस समथिंग दैट वी spend or waste a lot of time in. So when we are holding our phone in our hands, exactly, we don't have the self control to study or to actually learn something from it. But when we have a laptop, the tendency to for us to get distracted is very less. तो लैपटॉप इज एक्चुअली वेरी एडवांटेजियस। अगर आप चाहते हो, सो डेफिनेटली यू शुड गेट अ लैपटॉप। यू नीड अ लैपटॉप इन ऑर्डर टू लर्न एनीथिंग, and it doesn't have to be an extremely powerful laptop, but okay, you need one for gaming, so you can get that around 50-70K, I guess। 50 से 70 हजार में एक लैपटॉप आ जाता है, लेकिन जितना आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, यू विल डेफिनेटली, इट्स डेफिनेटली वर्थ considering if you are getting it for the right causes, because anything that you need to learn, you can learn from a laptop. It's a really nice tool to have. I'm streaming on my laptop right now as I speak. फोन में बहुत प्रॉब्लम है यार, लाइक मैंने बहुत ट्राई किया है। इवन व्हेन आई एम रीडिंग, फोन की स्क्रीन बहुत छोटी पड़ती है, विच इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग गेटिंग अ किंडल। दैट्स वन ऑफ माय प्लान्स कि मैं हर एक बुक तो खरीदते नहीं बैठ सकता। आई रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स, सो आई एम लाइक माय प्लान इज टू गेट अ किंडल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स to steer away from like holding my phone, because it is really easy to get distracted on your phone. Hello Unstoppable Fitness. ब्रो कॉलेज से कुछ पता नहीं फॉर एक्सप्लोरिंग सिटी, लो लेवल क्यों कर सकते हैं क्या जॉब या? ब्रो कॉलेज से कुछ पता नहीं फॉर एक्सप्लोरिंग सिटी, लो लेवल के यू कर सकते हैं क्या जॉब या? अनस्टॉपेबल फिटनेस, आई डोंट गेट यू। आप क्या पूछने मांग रहे हो? व्हाट इज योर क्वेश्चन रियली? कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, कुछ एडवाइस दे दो। घर से दूर जा रहा हूँ, डिग्री में थोड़ा अब बहुत ही इंटरेस्ट है, बस काइंड स्कैर्ड। मैं आपको देने वाला हूँ। आई लव गेमिंग। आई एम गोइंग टू गिव जनरल एडवाइस अबाउट द टॉपिक दैट आई हैव chosen, like deep work. I'm going to talk about deep work in a little bit. आज लेट हो गई, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। I'm going to talk about deep work, and I'm going to talk. I have a point in mind, so I'm getting to it. तब तक थोड़े थोड़े लोग आंसर कर देता हूँ, उसके बाद I'll get to this topic.
Hey man, my exams start this Saturday and I'm still not confident on my prep. Even when I have done the whole syllabus along with revision, what should I do? You should meditate and you should calm down. You should relax. And one more advice or tip that I would like to give you is that the best way to improve at some particular thing is to do that thing again and again. So if you're giving exams, if you have any sort of an exam, right, try and give as many mocks as you can, because what a mock exam does is that it exactly replicates the situation. The point is not that you've studied everything. The point is when you're giving a mock or when you're giving or attempting a paper, right, what happens is that you are literally, your mind mentally, you're replicating the amount of pressure that you get while sitting in an exam hall. So try, and if you're giving any exam, regardless if it be a college exam, whatever, if you give mock papers, right, or if you give, like, you give yourself that environment. The point is to give yourself an environment. Now don't overthink and go and get the pyq papers. If you can't get them, just answer any amount of questions, random questions. Ask ChatGPT to make you a random paper and attempt those. Like maybe give yourself 1 hour constraint or 1.5 constraint and actually replicate being in the exam hall. This will help you a lot. The more you give it, the more confident you will get at it, because that is exactly how you get good at anything. It's by repetition. There is no other shortcut, there is no other way. So if you are feeling scared, that is one thing that you can do, and other than that, you really need to understand or learn the art of relaxing, because life is going to constantly throw problems at you. The best thing that you can do is that be calm while facing those problems, because if you're not relaxed, you will always make it worse for yourself. भैया नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाई, मैं ठीक हूँ यार, बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आई हैड टू गो गेट मिल्क एक्चुअली, एंड उस चक्कर में मैं भीग गया पूरा, बिकॉज अभी बहुत जोर से बारिश आ रही थी, बिकॉज आई वांटेड टू मेक टी एंड आई डिड नॉट हैव मिल्क. सो अभी मैं भीग गया हूँ यार, लाइक माई हेयर इज entirely वेट. आई ट्राइड टू ड्राई इट, बट या इट्स स्टिल entirely वेट. Bhaiya, what's the topic today? I don't have a question for a while, but give some advice or something that you will give me as a big brother to 18-year-old. Yes, I'm going to. I'm going to get to that topic. It's deep work. The topic, I'm going to get to it. So actually, the thing is कि आज मैं जब चाय बना रहा था, I was making tea for myself, and I'm no expert, okay? I'm no expert. I know that making tea is very is something very basic. But मैं चाय रेगुलरली बनाता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ. बट जब मैं चाय बना रहा था, सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट मैं टेस्ट करते रहता हूँ अलग-अलग, लाइक अलग-अलग पोर्शंस, अलग-अलग क्वांटिटी. लाइक मैं कभी 2/3 वो चाय की पत्ती डाल देता हूँ, कभी उससे कम डालता हूँ, कभी ज़्यादा डालता हूँ. इतने दिनों से मैं कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई हैव बीन रिसेंटली मेकिंग टी. उसके पहले मैं कॉफ़ी बनाता था. सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज के मैंने अलग-अलग फ्लेवर्स को ट्राई, नॉट अलग-अलग फ्लेवर्स बट अलग-अलग पोर्शंस को ट्राई किया, राइट? मैंने मिल्क की क्वांटिटी को चेंज किया, फिर मैंने चाय की क्वांटिटी को चेंज किया, चाय पत्ती की क्वांटिटी को चेंज किया, मैंने पानी की क्वांटिटी को चेंज किया, एंड मैंने अलग-अलग मेथड्स ट्राई किया. आई आल्सो लुक्ड एट यूट्यूब एक्चुअली कि हाउ टू मेक द परफेक्ट टी, बिकॉज़ आई वाज नॉट गेटिंग द परफेक्ट टी, द काइंड ऑफ टेस्ट दैट आई वांटेड. बट नाउ यू सी, उससे मुझे ध्यान आया कि how we are not flexible with our careers and or how we are not flexible with decisions that we take in our life, कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे लाइफ में भी अगर कोई चीज है तो we will need to do trial and error in order to actually get the desired taste. But most people, they will take one or two decisions, be it for their career, be it in anything for their lives, maybe friends भी हम एक या दो बार ही बनाते हैं. जब हम बच्चे होते हैं बनाते हैं, फिर कॉलेज में जो बन जाते हैं, और फिर जब ऑफिस लाइफ में या जो भी बिजनेस की वजह से हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उसके बाद मोस्ट पीपल विल नॉट वॉन्डर आउट, दे वोंट गिव समथिंग एन अटेम्प्ट, दे वोंट ट्राई, दे वोंट क्वेश्चन देमसेल्व्स. लेकिन ट्रायल एंड एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग. करियर की तो मैं बात करते रहता हूं, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट गुड एट एनीथिंग, इवन इफ इट बी अ स्पोर्ट, यू नो, इफ यू आस्क पीपल के एटलीस्ट मेरे साथ,
आई हैव नेवर ओनली प्लेड वन स्पोर्ट, मैंने क्रिकेट भी ट्राई किया है, मैं पहले बचपन में क्रिकेट भी खेलता था, फिर मैं बहुत टाइम तक फुटबॉल खेलता था, मैंने बास्केटबॉल भी ट्राई किया है खेलना, मैंने वॉलीबॉल भी खेला हुआ है। तो इतने सारे स्पोर्ट्स खेलने के बाद ही मुझे पता चला था कि फुटबॉल मुझे एक्चुअली में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, एंड आई स्टक विद फुटबॉल. So football is the sport that I've played most in my life. And similarly, if you look at it, it applies to every damn thing in your life. Look at your hairstyles. If you want to actually like get your desired, or you want to get a good hairstyle, the key is कि आपको बहुत बार गलती करनी पड़ेगी, बहुत बार आपकी हेयर स्टाइल, या आप जब बार्बर के पास जाओगे तो दे विल मेस इट अप, because you're experimenting, because you're trying. But while you're experimenting and you're trying, in that you will come across the perfect hairstyle, or what you desire, or what is your ideal hairstyle. लेकिन जब तक आप ये ट्रायल एंड एरर नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आइडियल हेयर स्टाइल क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ में. So similarly, everything starts with trial and error. It's sort of a mindset that you need to approach to experiment things. But unfortunately, a lot of people, we just have like this closed mindset कि कोई भी चीज को ट्राई नहीं करना, कोई भी चीज को देखना नहीं है, सिर्फ जो हमें जितना हमारे सामने है उतना देखकर इजीली एक्सेप्ट कर लेना है, क्वेश्चन नहीं करना. So I really want you guys to adapt this trial and error mindset, not only for your career, for everything that you do in your life. Keep an open mind. Now, coming to deep work, okay? No matter whatever you want to do in life, okay, the thing is that you have to get good at it, and in order to get good at something, you will need to sit with it and spend a lot of hours with that thing. Repetition is of course required, it's needed, but other than that, you will need to have the ability to learn things, and in order to learn, you will have to sit with something for hours, and you might even get bored, you might even not like it at times, you might even feel that it is hard to do. But it is very important if you want to learn anything, and you will need to learn things if you want to get good at them. You will have of course you will have to practice, but at the same time you will have to learn. So that is why you need deep work. What is deep work? The ability to sit with something, be it your homework, be it any work, be it some sort of research that you're doing, be it some sort of a be it anything, be it a book. You will have to sit with it for hours, you'll have to take in the knowledge that it gives you, and you'll have to calmly accept it, and then maybe you even have to come back to it, and you will have to make your own notes for it. And then if you keep repeating this process, that is how you get good at anything. Deep work. But most people unfortunately again do not have the ability to deep work. हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फोर्स किया गया है, क्योंकि हमें बताया गया है कि पढ़ाई करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो हमारा पढ़ाई से नेगेटिव रिश्ता बन जाता है. हमें लगता है कि अगर पढ़ाई करनी पड़ रही है, so that is something that we are doing out of our will. That's why you will see a lot of Indian students, they don't have anything innovation, like they don't have any innovating. Sorry, I got the wrong word. They don't innovate in any way. आप इंडियंस को इन जनरल आइडियाज ट्राई करते नहीं देखोगे. इंडियंस को आप सिर्फ जो बना बनाया पैटर्न है उसको चलाते देखोगे कि कैसे मैं चला लूं, जुगाड़ कैसे लगा लूं. So trial and error. And in order to get good at anything, you will have to develop a healthy relationship with studying, deep work. Now, in order to deep work, I'll give you some basic level tips. ठीक है? One of them is that आपको phone तो दूर रखना पड़ेगा. Phone is a major hindrance. This is something that I've tried personally in my life. And जितनी भी बार मुझे लर्निंग का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है या मेरा एक हिंड्रेंस है कि मैं बहुत ज्यादा फोन पे सीखता हूँ. लाइक आई यूज माई फोन अ लॉट फॉर रीडिंग थिंग्स, फॉर watching videos. I consume content in order to learn, but that's been a bottleneck for me, and I've found it much more helpful कि जब मैं लैपटॉप के सामने होता हूँ, जब मैं नोट्स बनाता हूँ, जब मैं पेन एंड पेपर को यूज करता हूँ, even if it be on a laptop, even if it be on a phone, as far as you're making notes, right, that is a better way to learn. So whenever you're learning something, get this habit of making notes out of it. Write them, whatever points that come to your mind, observe and write them.
Also, it's a skill in itself when you can think about something and then you can note it down on a paper, be it any form. It can be on your phone, like I have made notes, or it can be on your laptop notes. You'll find many websites. There's Notion, there's Obsidian. Otherwise, you can just use your standard MS Word यूज कर लो यार. लेकिन गेट दिस हैबिट और टेंडेंसी कि आपको जो भी मन में आए उसको टाइप डाउन करो, या तो टाइप करो या तो लिख लो पेन से, अगर आपको आदत नहीं है तो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन ये दोनों में से कोई एक चीज को करो. Because some of the most important things for you in your entire life are going to be your ability to speak your thoughts, your ability to write them down or write in general, and the quality of your thoughts, the kind of thoughts that you're coming across. Like, let's say, if I'm sitting by myself, or right now I'm actually just, I mean, of course I'm in front of you guys, but ये सारे topics कैसे आ रहे हैं मेरे मन में? Because I've been so much exposed to it, I've been so much curious, I've been learning so many things. That's the reason कि मैं ये topic आया. So now, for example, मैंने जब starting में trial and error की बात की, ट्रायल एंड एरर की आइडिया कैसे आई? मैं चाय बना रहा था एंड मैं ट्रायल एंड एरर के बारे में सोच रहा था. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स. व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स? What happens when you are sitting by yourself, and what kind of thoughts come to you? So improve your quality of thoughts. And how do you improve your quality of thoughts? By consuming better content, by actually having a purpose, by first of all also calming yourself down. You can't be nervous and stressed all the time, and when you are that way, you will not come up with good ideas. So it's very important for you to go in a certain direction with that. It's simple. Skill सीखो and earn by giving value. But in our society, government exam को status and power की तरह treat किया जाता है. इसमें skill कहाँ है? स्किल वही है ना यार, गवर्नमेंट एग्जाम को पार करने में, निकालने को भी तो स्किल बोल सकते हैं काइंड ऑफ, बिकॉज इट इज टफ. आई अग्री टू दैट कि गवर्नमेंट एग्जाम को निकालना, इट्स नॉट इजी. क्लियरिंग एनी एग्जाम इन इंडिया इज नॉट इजी. तो बोलने को तो वो भी स्किल है, राइट? लेकिन वही है यार, इट्स अ स्किल जस्ट क्लियरिंग दैट. बट या आई अग्री कि मोस्ट पीपल्स मोटिवेशन और द रीजन दे वांट टू get in government exam is because उनको स्टेबिलिटी चाहिए. उनको चाहिए कि नहीं, उनके पास, उनको ज्यादा काम ना करना पड़े, आगे जाके आप आराम से सिक्योरिटी मिल जाए. उनकी भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत सोच है. नाउ थिंक ऑफ इट एज अ सोसाइटी. व्हाट आर यू इनकरेजिंग डूइंग, लाइक फॉर पीपल? आप इनकरेज कर रहे हो कि काम कम करना पड़े. काम कम क्यों करना है यार? एंड काम का भी हमारे समाज में नेगेटिव कॉनोटेशन है. काम या तो भर के करना है, गधों की तरह, मजदूर की तरह, जैसे कॉर्पोरेट में माना जाता है कि 12-12 घंटे कर लो. उसके रिसेंटली ये चीज हुई भी थी, लाइक अ फ्यू इयर्स बैक, नारायण मूर्ति, he had this claim, or he wanted his employees to work for 12 hours. And that's crazy. Like, मैं deep work की बात कर रहा हूँ. I'm going to get to this point. But deep work, the point of deep work is that you can only do like 4 or 3 or even 2 hours of it. And for beginners, you can only probably do 10 or 15 minutes of deep work. अब हम जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, उसमें हमारी फॉल्ट नहीं है. If you want to do good quality work, you only actually can do like probably 1 hour of deep work every day as beginners. Anywhere between 15 minutes to 1 hour. इतनी हमारी एबिलिटी होती है. उसके ऊपर जो भी करना पड़ता है ना, दैट्स, उसमें हम कुछ सीख नहीं रहे. ठीक है? सो क्वालिटी इज ओनली 15 मिनट्स टू 1 hour. उसके बाद आपका जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो नीचे ही जा रही है. सो डीप वर्क का मेन रूल ये है. एंड दिस डीप वर्क की एक बुक भी है, आप लोग पढ़ सकते हो इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, बाय कैल न्यूपोर्ट. ही इज एन MIT PhD. बहुत फाड़ के रखा है बंदा ने. ही इज अ वेरी अक्रेडिटेड गाय. मैंने उसकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है. बहुत सारी से मेरा मतलब है 2-3 बुक पढ़ी हुई है. मैंने उसके पॉडकास्ट भी सुने हुए, देखे हुए उसके वीडियोस, and it's very useful what he has to say. But the essence is that deep work versus surface level work. Most people just do surface level work. What is surface level work? कि कोई भी चीज को थोड़ा surface में पकड़ा, टच किया, एंड उसके ऊपर कुछ वो जो भी समझ में आ रहा है वो बता दिया. Deep work is quality work. उसके लिए आपको बहुत सारे साल देने पड़ते हैं, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है. एंड इट डजंट हैपन एक दिन में. ऐसा नहीं होता कि डीप वर्क के चक्कर में कि मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं डीप वर्क करूंगा, मैं 8 घंटे पढ़ने लग गया. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स लाइक एन एक्सरसाइज. कि आप पहले आपने स्टार्ट किया 10 मिनट्स, 5 मिनट्स,
बट मोर इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, कि अगर आप हर रोज करते जाओगे ये मसल एक्सरसाइज, कि यू आर सिटिंग विद समथिंग एंड यू आर एक्चुअली जस्ट अलाउिंग योरसेल्फ टू ड्वेल दैट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, आराम से 15-15 मिनट, 10-10 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फोन को दूर रख दिया, अपने नोट्स लेकर बैठे हो, पेन पेपर लेकर बैठे हो। आज मैं ऐसे ही कर रहा था। आई एम कमिंग अप विद द वीडियो इज ऑन IIT JEE। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 10 से 20 मिनट लगे मुझे, मैंने फोन को दूर रख दिया, लैपटॉप खोला और उसमें अपनी स्क्रिप्ट लिख दी, या तो अपने नोट्स बना ली कि मुझे ये चीजों के बारे में बात करनी है। एंड दैट वर्क वॉज रियली नाइस। 10-20 मिनट्स मैंने किया है, लेकिन उससे एनर्जी भी बहुत गई मेरी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 10 से 20 मिनट की ही एबिलिटी होती है हमारी, लेकिन वो 10 से 20 मिनट अगर आपने अच्छे से किया एंड कंसिस्टेंटली किया ना, तो यू विल गेट रियली गुड एट थिंग्स। एंड इवन दैट मोस्ट पीपल डोंट डू, दैट इज द बेयर मिनिमम। एंड आप देखोगे कि मोस्ट पीपल ओनली डू सर्फेस लेवल वर्क। सर्फेस लेवल वर्क क्या है, कि मैं पढ़ाई के साथ 5-5 घंटे लेकर बैठा हूं, समझ कुछ नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई यू फाइंड सो मेनी पीपल, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि मैं बैठ के धक्के मार रहा हूँ अपने दिमाग में, ट्राई कर रहा हूँ सीखने का, समझने का, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट डूइंग डीप वर्क, आई एम डूइंग ओनली सरफेस लेवल वर्क। फोन को पास लेकर बैठा हूँ, बार बार अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, एंड थॉट्स आ रहे हैं तो फिर आई डोंट इवन हैव द कंट्रोल ओवर माय थॉट्स, कि मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या है। डीप वर्क की पूरी कला होती है यार। सो गिव योरसेल्फ 10 to 15 मिनट्स, बट उसमें क्वालिटी वर्क करो। As you said, it will become boredom feels hard, and when it feels boredom feels hard, that time it feel like this is not for me. How to deal with this? You will have to deal with this, Sahil. How to deal with that is that you will have to accept it, and boredom will slowly become beautiful for you, because boredom is sort of calming, and it is only when you are bored that you actually get good ideas. If you are constantly stimulated, if you are constantly scrolling through reels, right? If you're constantly scrolling through reels, there won't be any quality thoughts that you get. आपको बार बार अलग अलग टॉपिक्स के रील्स आएगी या वीडियोस आप देख लोगे, एल्गोरिदम के भरोसे आप चल रहे हो। और लाइक अगर एल्गोरिदम के नहीं, तो आपके लाइफ में अलग अलग इवेंट आएंगे रैंडम। आपको किसी की शादी में जाना है, आपको कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो उसमें कोई रैंडमली बुला रहा है। सो यू वोंट बी कंट्रोलिंग योर लाइफ when you don't accept or don't understand the power of being bored. Being bored is so much better than just constantly being stimulated by cheap stimuli. What is cheap stimuli? It's just grabbing your phone and चलो कुछ नहीं है, रेस्ट करने के लिए मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखो, इसका मैं आपको एक बिगिनर टिप भी देता हूँ, कि अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो अपने फोन से, या यू कंस्टेंटली कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो पहले रादर देन कंप्लीटली थ्रोइंग आउट द डिस्ट्रैक्शन, कि चलो फोन से एडिक्शन है, फोन को फेंक ही देता हूँ, बिल्कुल मैं यूज ही नहीं करूंगा, उससे अच्छा है कि अपने टाइम को कम करो ग्रेजुअली। चलो फोन में देखो कि आप क्या कर रहे हो ज्यादा। अगर आप बहुत ज्यादा रील चला रहे हो, तो पहले अपने आप से बोलो कि चलो मैं रील चलाना कम करूंगा। अंडरस्टैंड द रूट कॉज, एंड एज यू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, you will more likely be able to beat that addiction. And first of all, accept that addiction, accept that problem, whatever problem that you have in your life. Most people won't accept that problem, and they constantly look for new things. For example, ये प्रोडक्टिविटी में बहुत होता है, एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट सर्कल्स में बहुत होता है, कि आप यूट्यूब में भी देखते होगे। इफ यू आर समवन लाइक मी, यू ऑलवेज कंस्टेंटली वांट टू इंप्रूव। तो इंप्रूव करने के लिए आपको नई नई चीजें नहीं सीखनी, इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी बैड हैबिट्स को पहले हटाना है। देखना है कि ऐसी सबसे बुरी आदत मेरी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, आई टेल यू पर्सनली, इट्स माई रिलेशनशिप विद माई फोन। इट्स नॉट द हेल्थीएस्ट। आई लव लर्निंग, ओके, I love spending time on my phone as well, but that's because I love learning. But if I was instead spending that time on my laptop and मैं direction में learn करता ना, तो I would have been much better with my information or with my knowledge. It would be much more directional, and फिर मैं उसको better way में express भी कर पाता। So that is a very major bottleneck that I have had. तो अब इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, कि चलो मैं डीप वर्क कैसे कर लूं, मैं अपने यूट्यूब को ऑप्टिमाइज कैसे कर लूं, मैं बेटर वीडियोस कैसे बनाऊं, मैं थंबनेल बेटर कैसे बनाऊं, मैं एडिट कैसे बेटर करूं, फर्स्ट माय अप्रोच शुड बी कि मैं अपनी बैड हैबिट को कैसे कंट्रोल करूं। व्हाट इज माय बैड हैबिट? माय रिलेशनशिप विद माय फोन। चलो मैं उसको पहले ठीक करता हूं। अगर क्योंकि मैंने उसको ठीक कर लिया ना, तो बाकी सारी चीजें करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। इट्स लाइक आई एम बीटिंग द मेन बैटल, जो बॉस है, आई एम मीटिंग द फाइनल लेवल बॉस। तो फिर तो दूसरे दूसरे को फाइट करना और इससे ज्यादा कौन खतरनाक है?
बाकी सारे तो मैं कर ही सकता हूँ compete उससे. Bro, I have no good friends. ब्रो, आई हैव नो गुड फ्रेंड्स जिसका साथ मैं अपनी अपनी बातें शेयर कर सकूं. कभी कभी बहुत अकेला फील होता है. जीरो फ्रेंड्स है मेरे, एंड भाई मुझसे चालाकी नहीं हो पाती, समझ नहीं पाता, लोग यूज कर लेते हैं. The only thing you need, Piyush, is honesty. And honesty, I think we have a wrong image of honesty. जब मैं बोल रहा हूँ कि you need honesty, honesty का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे यूज हो जाओ या आप सबकी बातों में हाँ मिलाओ. Honesty का मतलब है आप straight forward रहो. So I think the only thing that you need to do, Piyush, is आप honestly अपने thoughts को express करो. आपको जो लगे वो ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि फ्रेंड्स नहीं है, सो एक्चुअली ट्राई एंड टॉक टू अदर पीपल, एज मेनी पीपल एज यू कैन. आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करो दूसरे लोगों के सामने. अकेले फील करते हो, सो ट्राई एंड ज्वाइन सर्कल्स ऑफ थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. आपकी हॉबीज को देखो कि आपको कौन सी चीजें पसंद आ रही है. इफ यू लाइक सम स्पोर्ट, मेक फ्रेंड्स अराउंड स्पोर्ट्स. एंड मोस्टली ऑल्सो बिफ्रेंड अ हॉबी. आप पहले, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपके फ्रेंड्स नहीं, कि जो भी नहीं है, पहले आप एक फिगर आउट करो कि आपकी हॉबी क्या है. व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. Because how do people connect and how do you talk to people? You only talk to your friends or people about the things that you are interested in, right? आप दुनिया को एक certain lens से या नजरिए से देखते हो. So develop some hobbies. Look at the things, observe the world as and see what is it that you're interested in, Piyush. I'm asking in perspective of career. Like initially everything feels interesting and then become boring. Yes, I'll. So even in terms of and perspective of your career also, you will have to befriend the idea of boredom. You will get bored with things. They can't constantly be stimulating towards you. But if you really love something, right, you will only come up with ideas for that, even when you're bored. Explain in details. Science of boredom. देखो, द साइंस ऑफ बोर्डम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ साहिल. आई टेल, ओके, आई यूज इंग्लिश आई थिंक, बिकॉज यू ऑलवेज सेंड मी अ चैट इन इंग्लिश, सो आई जस्ट यूज इंग्लिश. So basically, how this connects with careers, Sahil, okay, is that you need to have some core thing, okay. I'll give you my example again. For me, my core thing or my purpose is not YouTube. My purpose, or like the thing that I most love, is learning things. So now what is this? All of this expression that I do, all of these videos that I make, everything that I do is only based out of one thing, and that is my love for learning. Okay. So now if I'm looking at the world through the lens of learning, right, I can connect anything with learning. So let's say, for my interests keep changing. Okay, that's the kind of person I am. Recently, I've been doing a historical Greek deep dive. So I watched the Odyssey. Then I ended up watching 300, The Rise of an Empire. And in this way, I also watched Gladiator 2. So now, what are all those things? Those are historical movies. And now recently I've been reading a lot about history through that. I was only recently today I was reading about Greek history. And before that, before some months, like it comes in phases for me. Before that, I was interested in Indian history, and I was reading about the Mughal period and all of that, and that was happening maybe a year back. So it will keep coming and going. All right.
So that's how it happens for me, at least, that it comes in phases for me. And if you ask me about boredom, everything you need to look at through a lens, a certain lens. Now when I'm studying history, I'm looking at it through the lens of learning. I'm not looking at it through any other lens. Okay, it's somewhat entertaining also, and other than that, it's also something that I can learn a lesson from. Now let's say it's very easy for me now, if I'm coming across from a lesson from Greek history. What is that? I'll tell you what I learned, or what how I was interpreting it. It was the idea of freedom, and that's something that I relate with, or recollect with. Like, okay, I love the idea of freedom. For me, a job is like the sacrifice of freedom, or for me, that is exactly why I actually do this thing. Like, to me, it is an expression. To me, it is liberty in itself. So what am I trying to tell you? I'm trying to tell you that I'm looking at everything through a central lens of learning. So whenever you're looking at something, when you get bored of something, try and make it interesting for yourself. Try and look at it through a different lens. Let's say you're trying to do some, like, drop shipping or something, like, you're trying to do some random career, you're trying to do something. And that is the problem, by the way, Sahil. If you're doing something for the money, you're very much likely to get bored of it. So it all comes back to actually choosing something that you are genuinely interested in. Your core value. What is your core value? For me, my core value is learning. So even if I'm not doing YouTube, right, I will always be interested in learning, regardless. And that's what I've been doing. So even if I'm working a job, I will always look at it through the eyes of learning. So find out what is your core thing. What is something like, what is the reason why you get bored with different things? What is the reason? Is it money that you're after? What is it, your end goal? What is it that you're trying to achieve with your career as well? For me, like, for most humans, it's not about the externals at the end of the day. Like, it's not about the money, because research says that after a certain point, money does not matter. If you have achieved even the basic, like, and achieving the basic is very easy in terms of money. Okay, freedom and money. So, Sahil, freedom and money, in order to achieve those things, you will have to constantly keep developing yourself, keep learning things. And whatever you choose, like, try and give your best to it until you can no more give to it. That's what happened with me in computer science. That although my reason for choosing computer science, I knew that I somewhere had in the back of my mind that I need to achieve freedom and I need money from this. So if I'm in computer science and if I'm doing good at computer science, I will eventually come to a point where I can do my hobbies. But then through long lessons, through making lots of mistakes, I realized that that is not something that I can do, because it's not even something that even remotely interesting to me. But now, if I was like looking back, if I was to again go back in computer science, could I do it? I can probably do it, because my reason, like, my ultimate reason is freedom and money, whatever, right? So if I was to actually do it, if I had no other option left, then I'd do it, only so that in the back of my mind, I'd always have this concept of freedom, or whatever my hobbies are, which is learning. So, okay, if it comes through computer science, no problem. So looking at that core that you have, if your core is freedom and money, right, Sahil? So do everything with that in the back of your mind. So even let's say you come up with a new interest, study it as much as you can, practice it, do the trial and error method, keep consistent with that at least for a few months, with the mindset that I'm only doing this to learn. This is an experiment. If I can do this, amazing. I'm going to completely get immersed into this for the 2 or 3 months until I find out that it is not for me. If I do find that out at all, I hope you get an idea, Sahil, of what I'm trying to explain to you. 20. So, matlab, pick things, then give your best. Yes, 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 very much. Kyuki, as far as you don't pick a thing, right? This is a problem that I also have, Sahil. That if I used to feel, at least I used to have it much more. It was very intense that I could not pick one thing, and because I could not pick one thing, I was not giving my best towards anything. It was like I was scattered across different directions, and when you're scattered across different directions, right, you will go nowhere.
It's like, let's say you have a crowd, there are 10 people in the crowd, and you like the idea of talking to everyone. Let's say you go and talk to everyone. Will you actually be able to connect with anyone in that crowd? No, you won't actually have a deep conversation with any one of them. In surface level, you've actually spoken to 10 people, but out of those 10 people, you are not actually going to connect with anyone of those 10 people. But if, as opposed to that, you are only talking to one or two people, right? So if you're talking to only one or two people, you will actually learn more, or you will have a very in-depth conversation with those one or two people. And if you keep that approach, right, you will actually find out more, and then eventually you can actually talk to other people as well. It does not have to bind you, but at the same time, you will have to choose something. So you need to pick something, and you don't need to think that once you pick that thing, you can't change it. You can always change it. But first pick that thing and then do whatever, like, you have to immerse yourself in that. Do the deep work. And if you find out that you're unable to do that thing throughout, after doing it consistently for at least 3 months, then you will know that, okay, this is not for me. Let me actually move on. भैया मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं कल आऊंगा। थैंक्स भैया फॉर वैल्यूबल टाइम ऑफ योर्स। हाँ, अनएम्प्लॉयड कैसे बने? पूरे दिन अपने फोन को हाथ में रखो एंड सबकी लाइव स्ट्रीम देखो। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हैबिट्स। 26 ईयर अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या करे बिना कोई टेक्निकल डिग्री के, किस फील्ड में करियर बनाए, इस पे ओपिनियन दे दो। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, सो वन थिंग दैट यू कैन यूटिलाइज, प्रमोद जी, इज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू पीपल। आप दूसरे लोगों से बात करो, रिश्ते बनाओ, वर्क ऑन रेफरल सिस्टम। व्हाट इज रेफरल सिस्टम? रेफरल सिस्टम मतलब आप दूसरों से रिलेशन अच्छे बनाओ, आप बातें अपनी इंप्रूव करो, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। देखो कि आपके पास कौन सी स्किल है, सॉफ्ट स्किल अपनी इंप्रूव करो, बिकॉज टेक्निकल के अलावा सॉफ्ट स्किल ही बच जाती है मेजर। जिस चीज को आप इंप्रूव करके एक्चुअली में दूसरी चीजों को कर सकते हो। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी है तो आप बिजनेस कर सकते हो, यू कैन गो इन टू सेल्स, आप कुछ भी कर सकते हो। सो एक ऑप्शन आपके लिए ये है, अगर आपकी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव हो जाए तो आप टीचिंग भी कर सकते हो। तो अपने सॉफ्ट स्किल पे काम करो प्रमोद जी। अगर आपको टेक्निकल कोई डिग्री नहीं है आपके पास, और आपको इंटरेस्ट भी नहीं है टेक्निकल कोई भी चीज में, तो देन वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। जा रहा हूँ पढ़ने, बाय बाय अमित। आई एम 17। हेलो सत्यम, मैं ठीक हूँ यार, आप कैसे हो भाई? आई एम 17, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू मेक अ करियर एंड नॉट अर्न मनी। Well, want me to make a career, not earn money, even though I actually did great in AI automation. We did. What do you mean, son? Already doing an AI automation company with other 4 people, did great in that, but not sure if I want to do it further. I'm 17, took humanities. I want to be a lawyer, but when I think about it, eventually my mind goes to then I will do business and do content creation and will travel to explore. Sanstuti, considering you're 17, you're making a lot of progress. If you're actually you did well in AI automation with a team of other 4 people, that's amazing. And if you're feeling all of these things that you want to do that, eventually you want to do that, I'd suggest that at least even if you are feeling like doing other things, I would suggest you to only do them in your free time. So let's say you're doing AI, right? You're doing AI automation. I don't exactly know what you're doing in AI automation, in an AI automation company, but stay in that company. Keep your base skill with yourself, whatever it be. Like, it can be maybe you're in sales, or maybe you're actually making code, or you're actually making models, whatever it be. Just use that skill for now, and
Keep using that skill. When you do that, right, you will develop a base skill. What is your base skill? That is AI right now. So there are so many AI automation companies right now. They're actually like, that is what is majorly hitting the market. I've seen so many startups only doing this: AI automation, AI automation, AI automation, making models, making models, making models. So there are so many companies like that. So if you have a skill set related to that, right, you are basically set for whatever hobbies that you want to do. Because the more you get good at with your base skill, right, you will be able to do more of your hobbies or whatever you want to do in the future. Let's say you want to do law. As far as you have some base skill, right, you can make money from that. And when you can make money from that, you can support your other hobbies. Let's say it be law. You can study for law while working with your base skill. The more you get better at your base skill, the easier it will get for you, and the lesser amount of time that you have to give to your base skill, right? Let's say when I was starting, it took me so many hours to make a good YouTube video because my speaking skill was not as good, right? And I did not know what all I needed to do. But now that I have a system, it is much easier for me to make a YouTube video. It is also much more powerful because I've been doing this thing for 1 year. My speaking skills have significantly improved, and now I kind of know what works, what doesn't work, what kind of videos that I want to make. I understand myself better now. So that becomes my base skill. So regardless of whatever I want to do now, I'm left with a lot of free time, right? So in that free time, I can explore my hobbies. If I want to learn something else, right now my aim is to become a career specialist. So what I'm actually doing is I'm learning different career paths so that I can guide other people, right? So all my free time I'm planning to invest into that, and that's what I've started. So before, like, YouTube in itself was a challenge for me because that thing in itself, I was not good at it. Like it would take me so long. But I gave that. I gave that initial period when I was not getting any good results. I still kept at it. So now that has become my base skill. So now that is my base skill. At that, after having that base skill, I can do several skills, as many skills that I want to learn, right? So I hope you get the idea, Sanskruti. How to be better in MCA? Bro, I don't want to leave home for MCA. Please tell me. See, MCA, yo-yo honey, is not a crucial or an important degree. If you've already done BCA or if you have any technical sort of a degree, or if you have BSc in computer science, I don't know what you have in bachelor's. MCA is not crucial by any means. So as far as you're good at coding, and only if you want to code, then consider MCA. Or if you want to get into tech. And let me tell you one thing about tech. The advantage of tech is that it is widely accessible. Now let's say you are a civil engineer, right? You might not have the same opportunities, or you might not be able to get into any company of your choice. But since you're in tech, right, anyone can learn anything online in tech because it is largely virtual, and you can even get foreign clients. So tech is something that you learn from yourself. You don't necessarily need MCA. If that's how much you don't want to do MCA, then learn by yourself. Learn on your laptop, okay? लोगों से बात करने में ही तो डर लगता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूं। तो अपने डर को हटाओ प्रमोद जी। मैं आपको प्रमोद जी सिंपल माइंडसेट देता हूं। देयर इज अ चांस कि आप शायद ओवरवेल्म्ड हो, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो, बट नो दिस फॉर अ फैक्ट प्रमोद जी, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि यू आर लेट, देन यू आर नॉट लेट, ठीक है? आई नो कि ऐसा लग सकता है, कंसिडरिंग कि 26 तक हमें ये सारी चीजें बताई जाती है कि यू नीड टू हैव योर करियर फिगर्ड आउट। सारे लोग घर ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, शादी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बट यू शुड नो दैट कि आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पास्ट का रिग्रेट लेकर बैठ सकते हो कि नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या तो यू कैन स्टार्ट फ्रेश। अपने बोर्ड, आप एक बोर्ड को इमेजिन करो, अपनी लाइफ, आप अपनी लाइफ को एक बोर्ड जैसे इमेजिन करो कि एक बोर्ड में जो पहले से लिखा हुआ है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर वो बोर्ड में बहुत सारे लोगों ने आकर या आपने खुद ने गलती कर ली है, आपने बहुत सारी चीजें लिख ली है, तो या तो आप वो बोर्ड को मिटाकर आपको जो नया लिखना है उसको लिखने की तैयारी कर सकते हो, या तो जो पहले से लिखा हुआ है उसको देखकर रो सकते हो कि यार बहुत सारी गलती हो गई, ये है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है,
ये है। नहीं, लुक एट इट एज अ फ्रेश माइंड प्रमोद जी, कि अब जो हो गया है वो हो गया है, आगे स्लोली स्लोली करके बढ़ना है, अनचढ़ना है, ठीक है प्रमोद जी। सो डोंट थिंक कि अब जो हो गया है तो मैं आगे क्या करूं। ट्राई एंड एक्चुअली इंप्रूव वन वन एट अ टाइम। एक छोटी सी छोटी चीज को करना, अपनी हैबिट को सुधारो प्रमोद जी। लुक एट योर डेली लाइफ कि व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग इन योर फ्री टाइम, आप क्या कर रहे हो, आपका दिन कैसे जा रहा है। जितना भी फ्री टाइम है ना, उसमें एक चीज को पकड़ो कि फॉर फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ योर मे बी योर फोकस और योर गोल, योर बिग गोल इज कि आपको करियर में कुछ फिगर आउट करना है। तो आपका गोल बना दो कि मैं अलग अलग चीजों को ट्राई करूंगा। स्टार्टिंग टुडे मैं कोई रैंडम स्किल या तो मैं कोई चीज कोर्स लूंगा इंटरनेट पे। आई एम गोना स्टार्ट टुडे, एंड ये कोर्स में मैं पढ़ने के बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या क्या सीखने को मिल रहा है, मैं एक्चुअली में सीख पा रहा हूँ कि नहीं। एंड अगर आपको इंग्लिश का नहीं भी आता तो यू कैन डू दिस सेम थिंग इन हिंदी। देयर आर लॉट्स ऑफ वाइडली अवेलेबल हिंदी कोर्सेज एज वेल। सो जो भी चीज है सीखो, लर्न प्रमोद जी। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? Consumerism is what most people are involved in, and they do, as far as I know. It's that we just keep consuming, consuming, consuming without producing, without creating. I don't know actually. It's a very wide economics wala term. What is consumerism, Samir? You tell me. What do you think is consumerism? You have आपके questions यार बहुत अच्छे होते हैं समीर जी। यार मेरी आवाज बैठने को आ गई। We are coming to the end of the stream. If a student from non-IT background, how such students start learning data science? By taking a course in data science, by looking at YouTube and then learning the fundamentals. Start freshly, because if you want to get into data science, then you need a little bit of math, but learn one at a time. Maybe for the first day learn 10 minutes of data science, understand the basics, understand the fundamentals, understand the prerequisites, that what is it that you're going to need in order to learn data science, which is you don't need much. You just need to start, and you need to give yourself, maybe like assign yourself 1 or 2 months, and in those 2 months every day you're going to do little bit of data science topics. Let's say today for starting data science I'm going to learn this basic, like for data science you actually need to be a little bit good at math, you need to understand math, and you need to understand Python. So maybe let's say today I will learn a little, very little thing, that how to print a line in Python, and it's very simple. So take it one at a time, Piyush. Convincing parents is not easy. They cannot understand things from your point of view. Still trying. Thank you, though. Sanstuti, you don't have to convince your parents. You need to understand this thing about Indian parents, that to be fair to them, you can't blame them if they don't understand your point of view, because they come from an entirely different time, and our time has very much progressed. Now we are no more in the same age as theirs, and it used to be entirely different. The job market, the way things worked are a little bit, not even little, it's significantly different from their times. So they have those ideas. So if they don't understand, there's not much you can do. What you can do, however, is continue doing whatever you want to do. And you don't always have to be 100% honest with them. Like if you truly love something, I'll give you an example. Now if now you've seen this happen widely, that people will often fight their parents in order to like approach or like be with their lover. Why do people do that? Because they love that person so much strongly. Or people will fight for their careers, or people will fight for things that they love, even from their parents, even from everyone in the world. So there are some things which are far greater than just your parents, which is your own personal autonomy and your personal like love, whatever it is that you love. So always keep that at the center.
So when you keep that at the center, you don't necessarily, you can try to explain to your parents, but you can't expect them to understand. Similarly, like, you can do this with everyone, like this applies to everyone. You can't convince the whole world of what it is that you feel. What you can do is that you can just try, and if they don't understand, then you have to leave that, because that is their part. Your part is only doing whatever you love, or whatever it is that feels right for yourself. Of course, that leaves you in a way that you might make mistakes, but those mistakes are going to be your learning point. So keep whatever you love as your center, and it's not necessary that your parents will understand you, because most Indian parents, frankly, they don't understand. And in those cases, just keep going with whatever it is that you're doing. You don't have to be 100% honest with your parents. Like, okay, lie to them if you have to sometimes, if they don't understand, that is. हाँ, 5 का ही। खुबाई, प्लीज डोंट स्पैम मत कीजिए मेरे भाई। मैं आपका मैसेज मैंने देख लिया एक बार। मेरे पास ओनली फोन है प्लस वाईफाई। अगर आपके पास फोन और वाईफाई है ना, तो आपके पास सब कुछ है पीयूष जी। फोन और वाईफाई से ज्यादा कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। फोन, वाईफाई और पेन और पेपर लेके बैठिए, एंड आपको एक एक करके जितना जो सीखना पड़े वो सीखिए। यू कैन स्टार्ट विथ योर फोन पीयूष जी, एब्सोल्युटली यू कैन स्टार्ट। खुबाई, प्लीज डोंट स्पैम, प्लीज। मैं आपका कमेंट पढ़ सकता हूं, आई एम गोइंग टू कम टू इट। भाई एक बात बताना कि मैं 18 साल का हूं, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए? आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए खुबाई जी। लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग एज मच एज यू कैन, लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, एंड नॉट जस्ट लर्निंग, लर्निंग विद एप्लीकेशन, कि कोई चीज को सीखो एंड उसको अप्लाई करो हर रोज, एंड कीप दैट कंसिस्टेंट। एक अपने दिन में 1 घंटा अलॉट कर दो कि ये मेरा मेरा पर्सनल टाइम है, एंड ये पर्सनल टाइम में मैं कुछ सीखूंगा, हर रोज सीखूंगा। यू कांट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। अगर बहुत कुछ ऐसा हो जिस दिन ना पढ़ पाओ तो ठीक है, लेकिन ये आपको कंसिस्टेंट रखना है। सिर्फ आज की बात नहीं, ये आपको एंड तक, जब तक आपके लाइफ के एंड तक आपको 1 घंटा अपने लर्निंग के लिए रखना है। अगर आप ये करोगे ना, सो देर इज अ गुड चांस के दिस रियली चेंजेस योर लाइफ, इट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ, एंड यू मे बी स्टार्ट टू सी दैट बहुत सारे लोग कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास एक अलग लेवल की क्लैरिटी है। Because everything starts small, everything good takes time and it starts small. So think about that 1 hour. You only need 1 hour every single day, but the cost is that it needs to be every day. And there will be times जहां पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे उस चीज को, लेकिन आपका काम है कि वापस वापस उस चीज पे आओ, आते जाओ आते जाओ। एंड वो एक चीज नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। लर्निंग एंड योर कम्युनिकेशन स्किल, कि आप बात कैसे करते हो, आप कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो। आस्क क्वेश्चंस, बेटर क्वेश्चंस, आस्क, लर्न टू आस्क गुड क्वेश्चंस, लर्न टू फ्रेम योरसेल्फ। देखो, बहुत बार ऐसा आएगा जब आपको लर्निंग का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आप पीछे छूट गए, मैं कुछ ना करूं, लेकिन आपका काम है कि वापस उस पे आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। कितने बार आप गिरोगे? जितने बचपन में अगर आप चलते चलते अगर कोई चीज को करते करते गिर जाते थे, तो ऐसा तो नहीं था ना कि आप बैठ जाते थे कि चलो अब तो मैं चल ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक बार गिर गया। आप वापस उठते थे। तो उठो, बार बार उठो। दैट इज हाउ लर्निंग वर्क्स, एंड दैट इज हाउ एनीथिंग इन लाइफ फ्रैंकली वर्क्स। पाइथन फोन पर कैसे सीखूं? डेटा एनालिसिस सीखना जरूरी है पीयूष जी। मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, वो कीजिएगा। इसके बाद या तो अभी आप ये लाइव स्ट्रीम से हटिए, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में ही है आप, राइट? सर्च डेटा साइंस कोर्स, इतना लिखो, आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। डेटा साइंस कोर्स इन हिंदी, अगर आपको हिंदी में सीखना है तो, एंड स्टार्ट देयर, एंड पेन एंड पेपर साथ में लेकर बैठिए। इतना करना है आपको पीयूष जी, बस।
बाय द वे गाइस, आप में से जितने लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है अपने करियर को लेकर एंड आप ऐसे ही गाइडेंस चाहते हो एंड आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम वन ऑन वन कॉल पर सुनूं, तो आप लिंक चेक कर लो जो मैंने चैट पे दी हुई है, पिंड चैट पे, एंड यू कैन गेट ऑन अ वन ऑन वन कॉल विथ मी थ्रू दैट. And that is going to be it for today's stream. I'm really sorry अर्शदीप. अच्छा ठीक है, मैं आपके भी आंसर देता हूँ, इसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने वाला. ओके. Is money making possible even today remotely? Yeah, of course it is possible, bro. I have done that and I'm still doing that. Suyesh Kadam, how to get out of comfort zone? One at a time. You get out of your comfort zone, like just think of it as the gym, like going to the gym. You don't go to the gym in the first day and lift the maximum amount of weight. You go to the gym in your first day and you maybe lift whatever it is that you can reach for your hand, and in fact you don't even lift in the first day when you go to the gym. You just move your body, or you warm yourself up. Okay. So if you do that, if you keep that approach, that whatever you want to learn or whatever you want to get good at, you take it one at a time and you give yourself maybe 5 or 4 minutes, even 3 minutes of your time, but do it consistently. So that if you keep consistent with it, you can get out of your comfort zone. Similarly, like exercise or going to the gym. Maybe when you go to the first day, you will face a lot of resistance. Maybe even if you go for the first week or 2 weeks, you might face resistance. But if you keep going, eventually it will become a norm. And then you have to get to the next level like that. And you don't even have to go to the gym from the first day. If you want to get good at exercise, you can be at home and you can take 5 minutes out of your time and maybe just do like 2 or 3 push-ups. So keep the goal as small as possible. And when you keep that, you can eventually get to whatever great or heights that you want to achieve. आपके कॉलेज का नाम क्या था? नहीं बता सकता यार. डॉक्स हो जाऊंगा मैं. Okay, not personal question. I think the future definitely, yeah, and one can make a solid career if they do work on that. What do you think? Yeah, of course, Sanstuti. I can't speak for the next 15, 20, 30 years, but what I can say is that right now AI is freaking booming. And because ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अभी देख रहा था, like I was going through a website and वहां पे सारी AI कंपनीज थी, स्टार्टअप्स थी पूरी. They were all doing basically the same thing, Sanstuti. So if आपकी स्किल है AI में, then like keep that as your base skill and आप explore करते रहो. अगर आपकी बेस स्किल बन गई ना, इट्स लाइक कोडिंग बेसिकली. कैसे लास्ट 10-15 साल में कोडिंग बहुत बार बोला गया था, कोडिंग 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 करो, कोडिंग सीखो, तो वैसे एआई बन गया है. एंड यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज दैट आर जंपिंग इनटू द लूप. बट एनीवेज, इफ यू आर ऑलरेडी लाइक आप बहुत टाइम से कर रहे हो इस चीज को एंड यू आर गुड एट इट, देन यू आर एट एन एडवांटेज. तो इसको बेस स्किल बना के रखो, भले आपको जो भी एक्सप्लोर करना है, you can get to that along with this base skill. Keep AI your base skill. Everyone in the coming times will need AI in some way or the other. Like they will need to interact with it. Maybe as a worker, maybe you treat AI as some sort of an assistant. Maybe you use AI for thumbnails like I do. Maybe you use AI for some or the other thing. Maybe you use AI as your organization system. You give your thoughts to it. It organizes those thoughts and then helps you. So basically, yeah, maybe next 15 year too, we can see a single person company too. Not 15 years, like that is already happening, Sanskruti. Single people, like one person business is like model is literally booming right now. People are making lots of personal businesses, like they are trying and trying and trying. So one person business model is already happening. Anyways, guys, that's it. Thank you for coming to the stream. This will be it. I will see you guys tomorrow at 8 p.m. Also, apart from that, if you guys want personal guidance from me, where I get on a one-on-one call with you and then listen to your problems and give you an entire guidance of what you need to do, how you can do, help you plan a roadmap, help you look at what you need to do in your career, in your life, then you can check the link that I have left in my chat. It's a pinned comment, or you can check my channel bio where you will find that link and you can book a one-on-one call with me. I'll see you guys in tomorrow's live stream at 8 p.m. Bye bye, guys. Wow, it's exactly 1 hour.
Guys, that's it for my stream. I'll see you guys tomorrow at 8.